Good evening, students. Let us go for our topic, that is public library. We have discussed the introductory features, the characteristics, how public library is having the open access, এটা ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ, all are the users, there is no bar, there is no restriction of any person that anyone can be the user or the reader of the public library, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବା ସର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର. So there is collection is general, ना आमर जो आमे पाठकीय संग्रह करूचे, जो पुस्तक जो पत्रिका सबू विशेष भाव रे साधारण विषय वस्तु को नहीं की ता हुई थाए, या जो आमर शिक्षागत ग्रंथालय अच्छी ताठरू भिन्न. जेमती कि शिक्षागत ग्रंथालय रे से फोकस करता है सिलेबस, टीचिंग एंड एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट को. एथरे किंतु तुमर साधारण नागरिक ठारू आरंभ करी समस्त ज्ञानी व्यक्ति मानक पर्यंत समस्त एठी सुविधा पाठकीय सुविधा करिवार व्यवस्था करा जाय था. तेणु आमे पढ़ीचे जे पब्लिक लाइब्रेरी रो जो दैट व्हाट इज पब्लिक लाइब्रेरी तार एनालिसिस कौन, दैट इज जे एमती एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जागु से एनालाइज करिछि, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस, पेड स्टाफ्स, तमने संगठित तुमरो कलेक्शंस बा संग्रह, पेड स्टाफ्स जो थरे कि स्टाफ मान को पेमेंट दिया जाउची बा कर्मचारी जे अछंती तांको दिया होची, सर्विस आवर बा को समय रे आमे सेवा प्रदान करूचे ग्रंथागार रे से विषय रहइबो, फैसिलिटेशंस कौन कौन सुविधा रहिबो, एवं फंड सपोर्ट आमर जो लाइब्रेरी करबा पई जो फंड दरकार बा लाइब्रेरी रो चलाया पई जो फाइनेंस दरकार ताकू कोठे आसे लोकल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट समस्ते जो हिसाब रे फंडिंग करंती फॉर पब्लिक लाइब्रेरी से कथा हमें एनालाइज करिचे. सो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एनालाइज करिचे. Now we will go to direct the functions of the library. So let us go before the functions of the library. Let us analyze the sub types or variations of public library. Public library रो प्रकार विषय रे आमे चिंता करिबा बा साधारण ग्रंथागार रो जो प्रकार अछि ताकू आमे जो क्लासिफिकेशन अछि ताकू आमे आलोचना करिबा. So you see public library are separated as urban, rural, branch, mobile libraries. So you see here urban means that is which is available in the cities or city libraries. City covers you starts from NSE, corporations, metros, like this. So libraries exist in these areas
we say that these are urban, but that is city libraries. Rural libraries, that is the small, even if small town libraries, so we say that is rural libraries, or there exist the village libraries, बा जोटा हमरो ग्राम्य ग्रंथागार विषय रे हमें कहूचे बा सहरर ग्रंथागार विषय रे कहूचे. So large systems with multiple branches, specialized services, business centers, job help desks. So these are the things available in our urban libraries. So you see that what the urban library is content. Urban library content that large systems with multiple branches. You see that in a municipality area or in a corporation area, so there are having not a single one. They are having many branches. बहुत जगह रे तांकर शाखा अछि जोटी की लोक माने आसिकी सेठी किना तांकर पाठकीय व्यवस्था पाई परचंती एवं पढ़ी परचंती. सो दैट इज ए नेटवर्किंग प्रोग्राम, लार्ज सिस्टम्स विथ मल्टीपल ब्रांचेस. बहुत ब्रांच अछि, शाखा थिबो, जेमति की आमे गोटे एनएससी कथा तमे जानि थिबो बा तुमे गोटे कॉर्पोरेशन कथा जानि थिबो, जेमति सेठी सब विभिन्न कॉर्पोरेट अच्छी बा यूनिट अच्छी, से यूनिट रे लाइब्रेरी सब अच्छी. स्पेशलाइज सर्विसेस से भी थाई पारे. स्पेशलाइज सर्विसेस कथा होउची जे तुमरो बिजनेस सेंटर्स. सो देयर इज हेल्प, जॉब हेल्प डेस्क. पीपल विल कम फॉर जॉब्स. आमे एज ए prospects of library but public library, we have to provide job help desks. So there are certain reference desks where people will get the helps. Means you see that the younger generation, the young generation बा जो माने young अछंती, जो माने job seekers, जो माने किछि जॉब पाइबा पई चाहउचंती, सर्विस पाइबा पई चाहउचंती, एम्प्लॉयमेंट पाइबा पई चाहउचंती, सेमानक पई सब सुविधा दिया जिवो बा सेमानक पई कोठी चाकरी रे बाहरिला, कोन एडवर्टाइजमेंट बाहरिला. सो स्पेशली दैट विल बी प्लान टू हेल्प द जॉब सीकर्स, जो माने जॉब चाहउचंती तांकू हमें देबा. एंड बिजनेस सेंटर्स, सो फॉर दैट people want to do business or people are doing business, how they will get their the customers, that will be also for promotion of business, there will be also facilitations. So that is a aspect of your urban or city libraries. Now let us come to rural or small town libraries. So it is rural means ग्राम्य बा ग्राम्य पाठागार विषय आमे कहूचे बा जोटा पंचायत कथा कहूचे बा गोटे लेवल ऑफ सिस्टम रे से सब जिनस आसुची. रूरल libraries that also covered that block libraries and also the panchayat libraries and also the village libraries, or within the village also there are ward libraries. So these are the things amaro ame pauche, smaller collection but critical for digital access and community connection in areas with limited services. What happens? There are challenges, सेठी बहुत किछि challenges अछि, जहाँ किछि हमको बहुत जिनस को आमे फेस करके से जिनस करिया पड़े बा ग्राम्य पाठागार रे से सब जिनस कोन हला क्रिटिकल फॉर डिजिटल एक्सेस. व्हाट हैपेंस?
आमे पछरे पढ़िबा गोटे डिजिटल डिवाइड कथा होची सेठी कि ना आपणकर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्था बा कंप्यूटराइज व्यवस्था बा नेटवर्किंग व्यवस्था इलेक्ट्रोनिकली तार असुविधा अच्छी तेणु ताकू कहला दीज आर वेरी क्रिटिकल सो देयर आर सम स्मॉल कलेक्शंस देयर इज लिमिटेड कलेक्शंस स्वल्पता रही बा अल्प आमर पाठकीय कलेक्शंस बा आमर पाठकीय जो मटेरियल्स तार लिमिटेशंस अच्छी क्रिटिकल फॉर डिजिटल एक्सेस बिकॉज सेठी ना कौन है ना जेहेतु कंप्यूटराइज फीचर्स बा इंफ्रास्ट्रक्चर सेठी बेसी नाही तेणु आम ये ना सेठी दैट इज बिकम क्रिटिकल एक्सेस फॉर क्रिटिकल फॉर डिजिटल एक्सेस विथ लिमिटेड सर्विसेस आम कौन करुचे ना ये अदर एडवांस लाइब्रेरी भाया आम ये ना सबू सर्विसेस दे पारुने आम ये ना having the limitations. Then there is, we came to know branch libraries, part of larger system often focused on neighborhood needs. So there are also, as I have told you, that urban libraries there are many branch libraries, and also in other means district libraries it has also branch libraries, block libraries it is also branch libraries, or in panchayat, so that we can open branch of public libraries whether they are in rural sector or in urban sector रे थांतु किमा rural sector रे थांतु तांकर आमे branch library को फैसिलिटेशन रहिबो बा शाखा ग्रंथागार रहिबो part of larger system as a larger system and often focused on neighborhood needs. So we will see that गोटे एरिया रे कौन तार आवश्यकता अच्छी ताकू देखिकी बा often will provide the literature services, books, journals जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छी ताकू तार नेबरहुड तार पाखापाखी जो सब आवश्यकता अच्छी बा लोकंकर जहाँ आवश्यकता अच्छी ताकू आम एनालाइज करिकी आमे ताकू प्रोवाइड करूछे. मोबाइल लाइब्रेरी, बुक मोबाइल्स reach remote or undeserved populations. So it is important that mobile library will move to the people where people are not able to come to the library. तार अर्थ होची जोठी की लाइब्रेरी की लोक माने आसी पारु नाहंती बा यूजर्स माने आसी पारु नाहंती से क्षेत्र रे कोन हबो ना लाइब्रेरी विल मूव. हाउ दे विल मूव? It will move by one system. Either we'll go through vehicles or we'll make the program by keeping books on a vehicle to the villages or the areas where people are not able to come to the library. जोठी की लोक माने लाइब्रेरी के आसी पारु नाहंती से क्षेत्र रे आमे मोबाइल लाइब्रेरी करिबा and my library will move to the people. So that is called as mobile libraries. Book mobiles, so we'll go with the mobile books. So books can move with the that system to the library. Reach remote or undeserved populations. जोठी reach remote कहले गोटे एरियाज जोठी की दैट जोटा अपहंच पहुँचवा से ना कष्ट जमती गोटे दुर्गम एरियाज पहाड़िया एरिया बा जो एरिया रे सब कम्युनिकेशन टिके एते सुविधा नहीं डेवलपमेंट एते नहीं से एरियाज रे पब्लिक लाइब्रेरी पहुँचवार आवश्यकता अच्छी. ता सहित मु तुमको कही आगुरी जे आमर लाइब्रेरी मूवमेंट बा लाइब्रेरी लॉज
So library laws by library legislation, library रो ग्रंथागार रो आईनी प्रणयन, ग्रंथागार आईनी प्रणयन विभिन्न राज्य रे हेची एवं ओडिशा राज्य रे हेची किंतु ठीक भाव में कार्यकारी हेई नाही, तापे हमर फंड प्रोवाइड हेई पारुनी बा एस्टाब्लिश हेई पारुनी, सेटा हबा पई अछि बा जोथरे कि लाइब्रेरी गोटे नेटवर्क पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क हबो एवं सेतरे कोन हबो ना स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक पंचायत विलेज सबुटी हम बा एठिक ना कॉर्पोरेशन ने सबु वार्ड बा सबु कॉर्पोरेशन ने लाइब्रेरी हम तेणु दैट विल बी ए नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज, कंप्लीट नेटवर्क ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज दैट विल बी पॉसिबल बा विभिन्न राज्य रे अछि आउ आम राज्य रे हबा पई अछि ओडिशा राज्य रे ताकू प्रणयन हबा पई आवश्यकता रही। सो टुडे विल हाइलाइट और विल एनालाइज द फंक्शंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, वेरी इंपोर्टेंट। आम जमती एकेडमिक लाइब्रेरी रे फंक्शंस आमे आलोचना करिथिले, सो दैट इज बेसिकली टू प्रोवाइड and to satisfy the needs of the students and teachers. So here what happens, now we have to satisfy the needs of the public, varieties of users, there is no bar of users, that is student, teachers, nothing, it is all from children to older age, everyone can be a reader who seeks the knowledge, ये knowledge पाइबा पे चाहूचंती बा knowledge gain करिया पे चाहूचंती, recreational बा अवसर विनोदन पाई किछि चाहूचंती, समय तांकर कटिया पे चाहूचंती, समस्त पे आमे एठी प्रोग्राम करिबा। So you see that first it is coming, public libraries perform a wide range of core and evolving functions. So wide range, पब्लिक लाइब्रेरी रेंज टा बहुत विस्तृत, तार सेवाटा बहुत विस्तृत, विभिन्न प्रकार सेवा से प्रदान करि थाए। सो वी विल एनालाइज वन बाय वन बेसिकली ऑफ कोर एंड इवॉल्विंग फंक्शंस, जो नुआ नुआ व्यवस्था आसुची जिते बळे समाज रे विभिन्न प्रकार व्यवस्था आसुची से समय रे तार रोल भी परिवर्तन होउची, तार भूमिका बा तार सेवा करिवार व्यवस्था बहुत विस्तृत होउची, बहुत दैट सृजनशील हवा कथा आसुची बा नुआ नुआ जिनस को प्रणयन करिवा पई पडुची। सेथि पई लाइब्रेरी रो थॉट प्रोसेस रे लाइब्रेरी साइंस हैज टू थिंक मोर टू प्रोवाइड मोर सर्विसेस। लाइब्रेरी विल नॉट ए स्टैटिक वन, they have to go with the evolving process, so new things they have to adopt, नुआ कथा से माने adopt करिवे, so that is evolving functions. So let us know what are the core and evolving functions, बा तार बेसिक जिंस कोन बा नुआ नुआ functions कोन आमे लाइब्रेरी रे करिबा। So first it is promote literacy. So promote literacy is important one, that is the as per the functions of the libraries. Then second is provide information services for daily needs. Let us analyze these two first. That promote literacy means what? Na साक्षरता. So that is a great challenge to every country or every state or every areas. That means everyone should get literate. साक्षरता अभियान, समस्ते साक्षर हंतु बा समस्ते शिक्षित हंतु,
So that is promoting means ताकू से लिटरेसी को केमिति बढ़ाई हम बा लिटरेसी रो जो साक्षरता को केमिति गोटे अंचल रे बढ़ा जीवो से मध्य पब्लिक लाइब्रेरी बा साधारण ग्रंथागार रो भूमिका रही। Then another one, reading habit. Reading habit, you know, that पठनर अभ्यास बा ज्ञान आहरणर अभ्यास बा लोकंग मन भितरे गोटे ज्ञान आहरण पई आग्रह सृष्टि करिबा सेटा ही होची गोटे अनदर इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी। पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत समस्ते ज्ञानी होंतु समस्ते पाठ पढ़ारे मन ध्यान दियंतु तेणु सेटा भी प्रोग्राम करिकी पब्लिक लाइब्रेरी बा आमर जो साधारण पाठागार ताकू करबा। Then another one is lifelong learning. You see that public library is a very important part of the society. गोटे समाज रो बा गोटे समाज को गोटे सुस्थ समाज गठन करिबारे बा शिक्षित समाज गठन करिबारे तार बहुत बड़ भूमिका अछि। ताक कह जाउची एहा एक सामाजिक अनुष्ठान जहाँ कौन करिबो ना समस्त को जीवन सारा शिक्षा व्यवस्था रे बांधी रखिबो। से छोट शिशु समय से कौन करिबो ना तांको शिशु साहित्य दबो एवं जेते विज्ञ हेबे बा गवेषणा भी करने को प्रस्तुत हेबे से मध्य सब प्रकार केयर नब। सो एठी कि ना शिशु ठारू आरंभ करिकी गवेषणा पर्यंत सबु समय रे से तांको सहित रहिबो। तेणु गोटे लाइफ लॉन्ग लर्निंग बा जो शिक्षा पाइबे शिक्षा सहित जड़ित हेबे जीवन सारा जीवन व्यापी गोटे मनीष बा आमर समाज केमती समाज रे सामाजिक व्यवस्था रे समस्त समय रे से शिक्षा सहित जड़ित रहिबो जहाँकि ज्ञान सहित जड़ित रहिबो। तेणु गोटे ज्ञानी समाज बा नॉलेज सोसाइटी गठन हेई पारिबो। तेणु दैट इज कॉल्ड एज लाइफ लर्निंग प्रोसेस बा that is a life learning promotion for improvising the society and to establish a knowledge society that is a matter of fact बा ज्ञानी समाज गोटे करिया पाई ग्रंथागार रो बा साधारण ग्रंथागार बा सार्वजनिक ग्रंथागार रो भूमिका बहुत अछि। देन early लिटरेसी प्रोग्राम सो जो माने छोट अच्छी शिशु अच्छी से जो माने ठीक भाव पाठ पढ़ी पारु नाहंती जो मानकर पाठक व्यवस्था ठीक नाही से पाखु लाइब्रेरी साहाय्य सहयोग पहुँचबो एवं से माने लाइब्रेरी भी जदि आसिले ताले से माने भी लाइब्रेरी फैसिलिटेशन पाइबे। सो by this story hours, toddler time, summer reading challenges. You see that today also there are people who are telling the stories very interestingly. So you have to take them and you have to provide them and you have to collect your users those who are having interest जो मानकर गप शुणिया पाई इच्छा अच्छी बा छोट छोट पिला मानकर जो इच्छा अच्छी ताकू तुम्हें अरेंजमेंट करके दब। समर रीडिंग चैलेंजेस समर समय रे समर वैकेशन रे पिलांकर जो छुट्टी हो जाउची सेते बेले तुम्हें कौन करिवो ना तुम्हें से मानकर जो रीडिंग चैलेंजेस अच्छी जो पाठ पढ़ा अच्छी जो नुआ पाठ को से माने जिबे बा से मानकर जो पाठकीय व्यवस्था अच्छी से सब जिनस को मध्य आमे प्रोवाइड करिबा एवं तांकर जो चैलेंजेस अच्छी जहाँ तांकर असुविधा अच्छी ताकू समाधान करिया पाई आमे विभिन्न एक्सपर्ट को डाकी बा लाइब्रेरी डाकी से बड़ा प्रोवाइड करिबा।
So another is book clubs, author talks, reading challenges for all ages. You see, book clubs, we have to make book clubs. गोटे हला कोन ना पुस्तक प्रकाशन होची, नुआ पुस्तक आसुची. सो आमे कोन करिबा ना सेथि पे those who are writing the books and those who are reading the books. So for that तांको संगठित करिकी आमे कोन करिबा ना सेमाने को पे गोटे बुक क्लब करि परिबा. गोटे प्रकृत गोटे प्रकार साहित्य उपरे गोटे दैट मीन्स ओडिया साहित्य उपरे जो मानकर इंटरेस्ट अच्छी. सो दे विल बी गेट क्लब बा सेथिरे सेमाने संगठित होइकी रहिबे एवं तमे निज भितरे आदान प्रदान करिवे. सेथिरे लाइब्रेरी रो भूमिका रहिबो. Then author talks, you know, that the writers will call the writers बा जो माने पुस्तक रो लेखक सेमाने आसीबे, सेमाने आसीकी सेमानकर आभिमुख्य को प्रकाश करिवे ग्रंथागार रे. सो that is called as author talks. Reading challenges for all ages. You see that the older people जो मान टिके ताकर बयस अधिक हो गलानी वृद्ध से माने लाइब्रेरी केमती आसीबे, से माने को एरिया रे बसिबे, से माने को सुविधा रे बसिबे, से माने पे केमती से माने आसी सीधा लाइब्रेरी बही खोजी परिबेनी, ताकू केमती बहीटा हमें दबा बा से मानकर कोन सुविधा सुविधा अछि बा से माने की प्रकार बही चाहउचंती ताकू हमें प्रोवाइड करिया पई व्यवस्था करिबा. सो विल फेस ऑल challenges for all ages. इवन छोट जो शिशु अच्छी केमती चेयर कर केमती टेबुल हम कौ पुस्तक रही कौन शिक्षा देले से बेटर पढ़ी पारे पढ़ाई आग्रह प्रकाश करें. तेणु से सब विषय वी हैव टू टेक केयर बा फ्रॉम द साइड ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी तरफ से सब केयर निया जिवो. सपोर्ट फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल education at every level. So you know there are levels of education: primary, secondary, higher. So likely school level, college level, university level, एवं that is आमे कहूचे जोटा गवेषणा होउची बा जोटी that is another level that we are giving more importance on finding more there is creativity in the knowledge. So we have to support formal as well as informal education. So शिक्षार सबु व्यवस्था रे आमे तांको सहयोग करिबा जा साधारण भाव रे आसुची बा जहा जोटा कि इनफॉर्मल अच्छी ताकू भी आमे से एजुकेशनल व्यवस्था को मध्य सहयोग करिबा. सो एट एवरी लेवल सबु लेवल ले जमती स्कूल पिलांग पाई, कॉलेज पिलांग पाई, गवेषक पाई, सो फॉर द टीचर्स एंड फॉर द पब्लिक, इवन फॉर पॉलिटिकल पीपल इन्वॉल्व एंड दोज हु आर राइटिंग दैट द राइटर्स साहित्य सहित जो माने जड़ित अछंती, साइंटिस्ट, फॉर एवरीवन वी हैव टू टेक केयर. आमे समस्त पे केयर नहीं आमे कौन करिबा ना आमरो बुक्स बा लिटरेचर प्रोवाइड करिबा. Then another one is provide information services for daily needs. You see, every time the society is changing, the system is improving, technique is evolving. So you see, some days back we are analyzing about computer. Now we are analyzing about AI, artificial intelligence. So there are many generations of computers. So likely computer became a part of our daily life. Daily life रे आमे केते केते challenges face करूचे, कौन कौन नुआ व्यवस्था आसुची ता विषय आमे जानिमा as per our daily requirement is concerned.
we have to know our market, we have to know our requirements. So आमे जदि अपडेट न हबा ताले दी सोसाइटी विल बी बैक. सो फॉर दैट रीजन आमर कौन होची ना डेली लाइफ रे जहाँ जहाँ दरकार अछि को सूचना दरकार अछि बा कौन कौन दरकार अछि ताकू कौन करिवो ना द पब्लिक लाइब्रेरी विल प्रोवाइड रेफरेंस एंड रेडी रेफरेंस. You see what happens? Reference, as I have told you, reference means गोटे तुमर व्यक्तिगत संबंधीय व्यवस्था बा ताकू आमे जो सूचना प्रदान करूचे बा जो पुस्तक प्रदान करूचे ताकू गोटे जड़े चाहूची जेतेबेले आमे ताकू प्रदान करूचे. दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस. दैट इज ए पर्सनल वेब सर्विस. आमे जेतेबेले पर्सनली ताकू दवा पे चाहूचे ताकू सेटा होची रेफरेंस सर्विसेस. रेडी रेफरेंस हेल्प मीन्स हमें जड़े किसी क्वेश्चन पचारला जने साधारण भाव में किसी क्वेश्चन पचारला आमे ताकू रिप्लाई दोचे ए बहीटी कोठी मिलिबो ए देश विषय मुझे जानिया पे चाहूची ए विषय आपनकर कौन कौन इनफॉरमेशन अच्छी. सो दैट इज कॉल्ड एज रेडी. ऑलरेडी इट इज प्रिपेयर्ड. सो दैट इज कॉल्ड एज रेडी रेफरेंस हेल्प. कंज्यूमर इनफॉरमेशन हेल्थ रिसोर्सेस से पचार जे गोटे ये जिनसा मुझे कौट पाई कौ मार्केट रे मते मिलिबो कि जड़े नुआ सिटी के आसी से सिटी विषय से जानिया पे चाहूची तो ताकू आपण माने पब्लिक लाइब्रेरी also will provide information through these reference and ready reference services. Health resources से कोठी ना तार स्वास्थ्यगत व्यवस्था भितर कोठी हॉस्पिटल कोठी तुम मेडिसिन शॉप्स तुम्हें बा कोठी से तार चेकअप सेंटर्स सब तुम्हें प्रोवाइड करबा. गवर्नमेंट फॉर्म्स. सो देयर आर डिफरेंट तार कनेक्टिविटी पाई बा तार रेसिडेंशियल अप्रोच पाई. सो देयर आर मेनी गवर्नमेंट फॉर्म्स आर देयर. इवन इफ फॉर एग्जांपल दिल्ली जे गोटे गैस कनेक्शन से नब तो तेणु से कौन सुविधा अच्छी कौट से पाइबो बा से तार कौन तार गवर्नमेंट हेल्प किसी पाइबा चाहूची तो सी तार कौटी आधार कार्ड करिवो कि कौटी तार वोटर आइडेंटिटी कार्ड करिवो सेथिपई तार कौट से फॉर्म मिलिबो बा गवर्नमेंट हेल्प किसी नब से सब थर मध्य लाइब्रेरी प्रोवाइड हवा उचित बा से सब जिनस लाइब्रेरी प्रोवाइड करे इन पब्लिक लाइब्रेरी. लीगल इन्फॉर्मेशंस. सो अनदर लीगल एस्पेक्ट रे कौन तार दरकार कोठी से तार आईनगत व्यवस्था रे तार कौन आवश्यकता अच्छी ताकू मध्य लाइब्रेरी आमे प्रोवाइड करि पारिबा. So basically another thing we are coming, that is job search assistance, very important for you also. आमे जो ओरिएंटेशन करूचे that is for your SSB and सेटा होची कोन ना तुमरो जॉब रिक्वायरमेंट जॉब कौन बाहरिला. सो जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स मीन्स तुमरो एम्प्लॉयमेंट न्यूज हला बा क्लासिफाइड करिके से क्लासिफाइड कॉलम्स अछि. So they have to, the public library has to take care very well से नब एवं से इंटरेस्ट नहीं कि कौन करिवो ना एम्प्लॉयमेंट न्यूजेस बा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रो जहाँ जहाँ दरकार से अनुसार से कोऑर्डिनेट करिवो जहाँ जॉब दरकार अछि ताकू से ग्रुप करिके ताकू इन्फॉर्मेशन पठेबे एवं ताकू हेल्प करिया को चेष्टा करिवे रिगार्डिंग द जॉब रिक्वायरमेंट. रिज्यूम हेल्प गोटे पिला तार बायोडाटा करिया पे चाहूची बा तार रिज्यूम करिया पे चाहूची ताकू भी सेते हेल्प करिवो. इंटरव्यू प्रिपरेशन पिला मन जाउचंती बा जो माने काली रो दिन रे सर्विस करिया पे किछि इंटरव्यू देवा पे चाहूचंती से मानो भी से हेल्प करियो. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड से विषय रे तांको प्रिपेयर करिया पे सुविधा दबो. ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स कोथरे से ऑनलाइन जॉब अप्लाई करेंगे नुआ सहर को समस्ते आसुचंती
तेणु से जॉब रिक्वायरमेंट रे आछंती तेणु से कौन करिबो ना ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स बा जॉब कोठी से अप्लाई करिवे जॉब इन्फॉर्मेशंस पाई परिवे सब जिनस रे तांको अवेयर करिवो बा तांको हेल्प करिवो दैट इज आवर one of the important functions of the library ajiro samay re. Then another is practical support. So practical support means in reality से कौन करिवो ना practically सब जिनस को सपोर्ट करिवो सहयोग करिवो tax forms voter registration health information financial literacy workshops you see. So these are not the exactly work of a library. आमे तले ग्रंथागार कहूचे आमे ग्रंथागार होची ज्ञानर भंडार कलेक्शंस ऑफ रीडिंग मटेरियल्स बा पठन योग्य मटेरियल्स आमे रखुचे संग्रह करूचे तेणु से पुस्तक हो पत्रिका हो न्यूज़पेपर हो आमे करूचे रखुचे किंतु दीज आर बियॉन्ड दी लाइब्रेरी फंक्शंस. आज यू नो आमे कहिचे जे लाइब्रेरी होची गोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक अनुष्ठान तेणु सामाजिक अनुष्ठान भाव रे समाज रे जहाँ जहाँ दरकार होची एवं विशेष करी पब्लिक लाइब्रेरी होची साधारण ग्रंथागार बा सर्वजनीन ग्रंथागार बा सबु लोकंग पई एहा प्रस्तुत तेणु सबु लोकंकर सेवा करिया पई सबु व्यवस्थार सबु आवश्यकतार पूरण पाई ये कौन करिवो ना हेल्प करूची. तेणु प्रैक्टिकल सपोर्ट कोथरे करूची ना टैक्स फॉर्म तुम्हें इनकम टैक्स दौचो सेल टैक्स दौचो व्हाट एवर टैक्स तुम्हें दौचो सो सेथरे तुम्हें केमती से प्रोवाइड करि परिबो से सब विषय इनफॉरमेशन तुम्हें भी दब. सो वोटर रजिस्ट्रेशन हाउ यू हैव टू गेट योर वोटर आइडेंटिटी कार्ड वोटर रजिस्ट्रेशन केमती करिवो तुमरो जो माने नुवा की नागरिक होचंदी तांकर केमती ना इंक्लूड होबो वोटर लिस्ट रे. सो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम. हेल्थ इंफॉर्मेशन. So what are the health centers, where are the health centers where you can take the helps that you can provide, and where are the health centers also will provide in government level in private level wherever we have to provide if they are asking you, if they are wanting from the library we are there to provide. So another is financial literacy workshops. So library has to make workshops. कर्मशाला से करिवो जो मानकर आवश्यकता अछि एवं जो माने फाइनेंशियली सपोर्ट करिया पे चाहूचंती गवर्नमेंट लेवल लो किछि प्रोग्राम आसुची किछि प्रोजेक्ट आसुची गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स आसुची सेल्फ प्रोजेक्ट आसुची तेणु से हेल्प किए पाई परिबे एवं कहाकु से जीवो एवं सेथरे कौन कौन सुविधा अछि फैसिलिटेशंस कौन आमे तांको प्रोवाइड करिबा थ्रू एस्टैब्लिशिंग वर्कशॉप्स थ्रू ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स बा कॉन्फ्रेंसेस आमे ताको लाइब्रेरी तरफ को ऑर्गेनाइज करिकी ताको करिबा. सो आमे एसबू जिनस सबू तुमर पब्लिक लाइब्रेरी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी बुझिल एवं फंक्शन को गले गोटे होची जे दैट इज प्रमोशन ऑफ लिटरेसी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डेली लाइफ एवं सेथरे हमर एसबू डेली लाइफ रे टैक्स फॉर्म्स वोटर रजिस्ट्रेशन सो जोटा सब जनरल जिनस तुम बुझिचो एवं सेथरे हमर रोल इट इज नॉट ओनली टू प्रोवाइड द बुक्स रादर वी विल प्रोवाइड all kinds of information that is required by the users मानकर बा पब्लिक रो जहाँ सब रिक्वायरमेंट अच्छी ताकू आमे प्रोवाइड करिबा. ओके वी विल गो टू द नेक्स्ट अदर फंक्शंस ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी.
Oh yes. You see, another one is serve as a center for community development and social infrastructure. You see that आमे जेतले पब्लिक लाइब्रेरी करूचे पब्लिक लाइब्रेरी मोटो होउची जे इट विल ओटे होउची कोन ना समाज रे ओटे उन्नति रे ओटे केंद्र भाव रे ये काम करिवो ना सर्व जे सेंटर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी बा समाज रो उन्नति पई यार ओटे केंद्र भाव रे ये कार्य करे कोन करे ना and also social infrastructure सामाजिक सांगठनिक व्यवस्था को मध्य केमती मजबूत करिवो तार भी सेथरे रोल अछि कल्चरल एक्टिविटीज सो यू नो सांस्कृतिक कार्यक्रम आमे जो कल्चरल एक्टिविटीज कहउचे कल्चरल बा सांस्कृतिक कार्यक्रम सेथरे कोन ना आर्ट एग्जिबिशन तुम्हें सब बुक एग्जिबिशन विषय सुनिच जानिच होची तेणु दे हैव टू कंडक्ट बा पब्लिक लाइब्रेरी हैज टू कंडक्ट आर्ट एग्जिबिट्स म्यूजिक परफॉर्मेंसेस फिल्म स्क्रीनिंग्स कल्चरल फेस्टिवल्स यू सी दैट द पब्लिक लाइब्रेरी कौन करिवो बा ग्रंथागार कौन करिवो ना एसबु जिनस रे भी एक्टिविटी रखिवो आर्ट एग्जिबिशन करिवो गोटे एरिया रे से आर्ट एग्जिबिशन को एग्जीक्यूट करिवो बा आर्ट एग्जिबिशन करिवो विभिन्न जो माने आर्टिस्ट अछंती से माननकु संगठित करिकि लोक माननकु जो माने पाठक अछंती से माने बा जो माने आग्रही अछंती आर्ट पई से सब जिंस करिवो बा साहित्य रो व्यवस्था भी करिवो सो विल आमे आग फिनिश करिबा तापरे आ अन्य जिंस को आलोचना करिबा सो म्यूजिक परफॉर्मेंसेस सो हमर जो संगीत व्यवस्था अछि संगीत व्यवस्था रे मध्य आनी आमे संगीत परफॉर्मेंस भी करिबा जो माने संगीतज्ञ अछंती एवं जो माने संगीत सुनिया को आग्रही अछंती ताकू भी आमे ऑर्गेनाइज करिबा लोक मानकर सांस्कृतिक बा से मानकर अवसर विनोदन पई बा से मानकर मन को खुशी करिया पई से सब जिंस हमें करे फिल्म स्क्रीनिंग्स सो विल आल्सो गो फॉर फिल्म्स चलचित्र व्यवस्था रे मध्य आमे चलचित्र को जो जो चलचित्र अलाउ अछि ताकू नै कि आमे स्क्रीनिंग करिबा जो माने अछंती चलचित्र देखिया पई चाहउछन ताकू आमे प्रोवाइड करिबा cultural festivals so there are cultural जिंस सब अच्छी जमती कि आम ओडिशा रे रज अच्छी अन्य जिंस अच्छी ताकू मध्य तुम्हें लाइब्रेरी तरफ रु ऑर्गेनाइज करिकी ताकू एस्टाब्लिश करिवे so these are the public activities but these are cultural activities there in public library we have to go as a center for community development एतरे कोन हबो ना लोक मानकर सांस्कृतिक व्यवस्था रे उन्नति आसीबो एवं सेथि पई हमरो लाइब्रेरी भी भूमिका रही छै programs for specific groups another wasila specific groups homework help for students जो माने छोटो पिला अछंती स्कूल ले पढुचंती ताको होमवर्क आसुची ताकर ट्यूटोरियल सपोर्ट नाही पेरेंट्स माने ताको ठीक सपोर्ट देई पारु नांती तेनु सेठी कोन करिवे ना लाइब्रेरी हैज टू अरेंज सर्टेन प्रोग्राम बाय व्हिच दे कैन गेट हेल्प फॉर देयर होमवर्क बस जो ताकर घर को जो दिया जाउची टैक्स सेटा केमती पिला माने करि परिबे ता पे भी करिवे स्टूडेंट मानक senior programs book clubs tech help companionship so you see that mean जो माने senior अछंती तांकू केमती हमें हेल्प करिवा those are not aware of जो
बुक क्लब सहित जोड़िबा नुआ नुआ बही जो आसुची बा नुआ बही विषय आमे जणेबा by clubbing them, by associating them. Then take help मनकर सेमाने किछि यूजेस जानि नाहंती, इंटरनेट रो यूज जानि नाहंती कि कंप्यूटराइज रो यूज जानि नाहंती, ताकू आमे से हेल्प दबा बा टेक्निकल हेल्प दा वैषयिक व्यवस्था शिक्षा बा वैषयिक ज्ञान विषय रे ताकू आमे जणेबा. कंपेनियनशिप माने ताकू एसोसिएट करिकि से जिंस रे आमे इन्वॉल्व करिबा. सर्विस फॉर immigrants and refugees, those who are coming outside, they are not having proper facilitation for everything, ताकू मध्य आमे जो refugees सेमान को आमे दबा. English classes, citizenship workshops and cultural navigations. You see, गोटे सोसाइटी की बा गोटे समाज को संपूर्ण रूपे जानिबा एवं सेथिरे गोटे नागरिकर कौन कर्तव्य अछि. तेणु से सब आमे कॉन्शियस सोसाइटी बा नॉलेजेस सोसाइटी आमे इम्प्रूवाइज करिबा. तेणु तापे आमे एटा कौन करिया इंग्लिश क्लासेस कर आज इंग्लिश एज ए मीडियम जोटा कि बहुत दरकार. सिटीजनशिप वर्कशॉप्स हाउ यू विल बी ए गुड सिटीजन बा रेस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स एंड ड्यूटीज ताको आमे जणेबा. एवं कल्चरल नेविगेशन, कल्चरल आमर रियल कल्चर कौन, आमर गोटे अंचल कल्चर कौन, आम नेशनल कल्चर कौन बा रीजनल कल्चर कौन बा आम ताको लोकल कल्चर कौन आम ताको जणै पारिबा. एक्ट एज ए सेफ स्पेस फॉर vulnerable populations, homeless individuals, lucky children and etc. Those who are having not sufficiency, जोटा आम आगे पढ़ु जे डिजिटल डिवाइड अच्छी, but those who are not having proper facilitation or they are not at the levels, से मानु को कौन करिबा दे आमे कौन करिबा फॉर vulnerable जो माने पाउ नांती सुविधा बा होमलेस से मानन पई आमे कौन करिबा फैसिलिटेशन दबा, रीडिंग मटेरियल्स दबा, जेमति कि आमे मोबाइल लाइब्रेरी से मानन पई पहुंचबा. ऑफर रिक्रिएशनल रीडिंग एंड एंटरटेनमेंट. तुम कहिछि जे रिक्रिएशनल हला अवसर विनोदन बा सेमानकर जो अवसर आमे अछि बा सेमानक मनोरंजन पाई बा जो व्यवस्था अछि ताकू आमे प्रोवाइड करूचे. दैट ऑफर फॉर रिक्रिएशनल रीडिंग एंड एंटरटेनमेंट. पॉपुलर फिक्शन जो सब भारी पॉपुलर बही अछि, ऑडियो बुक्स, मूवीज, वीडियो गेम्स एंड स्ट्रीमिंग एक्सेस हेल्पिंग people relax and enjoy leisure time. So एथरे कोन होची ना लाइब्रेरी रो फंक्शन बहुत बढ़ी जाउची. Library is a place where you will get all kinds of facilitations. That is, you will like wherever you are not getting something, you are missing your something you are missing in your home, something you are missing in your that means your schools, कॉलेजेस, ऑफिसेस, जो सब जिनस तुम एक्चुअली पाई पारु नाहंती से सब जिनस को आमे कौन करिबा आमे लाइब्रेरी रे प्रोवाइड हेई पारिबो. पीपल रिलैक्स एंड एंजॉय लीजर टाइम. समान टिके तांगा लीजर टाइम टा बसिगी समाने गपसप करि पारिबे, कथावार्ता हेई पारिबे. दे विल मिक्स विथ द पीपल, दे विल स्टार्ट रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप. सो समानकर बंधुत्वपूर्ण व्यवस्था सेठी हेई पारिबो एवं बाय व्हिच ना पॉपुलर फिक्शन जो जो बही भारी भल बही अच्छी जोटा कि भारी आदृत पुस्तक, ऑडियो बुक्स बस से केवल शुणिमा व्यवस्था रे, मूवीज अच्छी इंपोर्टेंट मूवीज. सो वीडियो गेम्स दैट फॉर द चिल्ड्रेन एंड स्ट्रीमिंग एक्सेस, पीपल रिलैक्स एंड एंजॉय लिटरेचर टाइम. सो दीज आर अदर functions of the public library. So act as a public forum for democracy. गणतांत्रिक व्यवस्था पई ये गोटे मध्य गोटे केंद्र बा फोरम कोन होची प्रोवाइड फ्री एंड अनबैस्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप एंड सिविक एंगेजमेंट. तेणु जने नागरिकर कर्तव्य कोन से कथा मध्य एटी से तबा पब्लिक डेमोक्रेसी जोटा आमे कहूचे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन. होस्ट पब्लिक मीटिंग्स, डिबेट
voter education, discussion and current issues जहाँ जहाँ आसूची से विषय रे लोक कॉन्शियस करिया होची तार another aspect. Defend intellectual freedom and resist censorship. So आमे जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम अच्छी बा आमे ताकू केमती इंटेलेक्चुअली आमे जिनसटा को परिप्रकाश करिबा से विषय रे आमे आलोचना करि परिबा बा सेठी सुविधा दबा. Extend services for digital inclusion and outreach. So you see, as per the advanced society, we have to provide computerized facilities in the library. So it is computer access, Wi-Fi, as you know, internet services, one-on-one tech help, digital literacy training. So computerized training madhya hame daba, how they can get the website को ସେମାନେ केमती यूज करि परिबे कोन करि परिबे. Basic computer skills, internet safety, AI tools. Today it is a very important one, artificial intelligence, how they will use and they will go for that. Then online job applications. So some those who having जो मानकर सुविधा नाही ऑनलाइन ने सेमानकर फैसिलिटेशन नाही सेमानक मध्य लाइब्रेरी सुविधा दिया जीवो जे सेमान केंदी सेमानकर ऑनलाइन एप्लीकेशंस for jobs, for other things they can go for. Outreach to remote, divergent or marginalized areas, mobile services, partnerships with the community organizations. You see, जोटी पहुंची पारुने आमे disadvantaged जो माने एडवांटेज तांक पाए पहुंचीनी सामाजिक व्यवस्था बा सुविधा पहुंची पारि नै सेमान पाखे पहुंचीबा. मार्जिनलाइज्ड एरियाज जोटी की बहुत कम डेवलपमेंट हेची सेमन एरिया. मोबाइल सर्विसेज पार्टनरशिप्स विथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस सेठी को कम्युनिटी अछि सामाजिक अनुष्ठान अछि क्लब्स अछि संगठन अछि सेमान पाखे सहित लाइब्रेरी क्लबिंग करिवो बा तांक सहित मिसिबो मिसी कोन करिवो ना से मानकर उन्नति पे कार्य करिवो. So today we will last come to the current trends in public libraries. Okay. Digital transformation and inclusion. Libraries remain key players in bridging the digital divide by providing devices, internet and training. You see. So digital divide, it is a very important one. Bridging the digital divide. Digital divide means that where is the gap जो मानक पाखे कंप्यूटर नाही जो मानक पाखे से डिजिटल प्रोसेस जानी नाहंती जो माने इंटरनेट रो व्यवस्था जानी नाहंती बा तम सुविधा नाही से कोन लाइब्रेरी से मानक प्रोवाइड करिवो से गैप को कोन करिवो ना से गैप को दूरेया पे चेष्टा करिवो बा जो माने सुविधा रे नाहंती से मानक पाखे पहुंचैबो. तो दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल डिवाइड. दोज आर नॉट हैविंग proper digital facilitations and semana पाखे केमती जिनसटा पहुंचीबो. So that is by providing devices आमे कोन करिबा ना computerized services provide करिबा एवं सेमान को इंटरनेट बा ट्रेनिंग प्रोवाइड स्पेशली फॉर सीनियर्स एंड लो इनकम ग्रुप्स. Immigrants and rural residents many now offer digital literacy or emerging technologies like AI विषय मध्य सेमानकु आमे एजुकेट करिबा. Expanded community role beyond books, libraries function as a adult education hubs, financial literacy, health and wellness, workforce skills, makerspace and social support centers. You see, financial literacy तुम जानछो जो गवर्नमेंट रो जो प्रोग्राम आसुची how to help people, how to provide the helps in the Subhadra योजना अछि केमती कोन करिवे how people will get. Health सेमानकर केमती इंश्योरेंस करिवे केमती गवर्नमेंट इंश्योरेंस पाइबे से सब जिंसो. Wellness how they will get better कोन कोन गवर्नमेंट रो फैसिलिटीज अछि. Workforce skills जो कोन कोन स्किल दरकार कोन डेवलपमेंट दरकार से सब जिंसो भितरे आमे तांको एजुकेट करिवा. मेकर स्पेस जो क्रिएटिव एक्टिविटीज अछि बा आमे जो माने दे वांट टू डू सर्टेन थिंग्स एंड टू प्रोवाइड सर्टेन थिंग्स बा समाज समाज किसी शिक्षा देवा पे चाहउचंती अन्य मानू किसी शिक्षा देवा पे करचंती डेमोन्स्ट्रेट करिया पे चाहउचंती तेनु से माने सृजनशील व्यवस्था को जोटी आमे से गोथा भी लाइब्रेरी करि परिबा. सोशल सपोर्ट सेंटर्स बा आमे सोसाइटी रे केमते हाउ टू इंप्रूव द सोसाइटी
तेणु से भी सपोर्ट देबा those who are deprived people. Inclusivity and equity, greater focus on culturally responsive services and multilingual collections and programs for diverse populations. इट डाइवर्स पॉपुलेशंस कहले आम कही पब्लिक लाइब्रेरी कौन रेस्ट्रिक्शन नहीं हु आर विल बी द यूजर्स एवरीवन कैन बी सो दैट इज डाइवर्स बा मल्टीपल से कौन रेस्ट्रिक्शंस नहीं एनीवन कैन बी यूजर. ग्रेटर फोकस ऑन कल्चरली रेस्पॉन्सिव सर्विसेज. सो कल्चरली मीन्स आमर जो सामाजिक परंपरा जो संस्कृति अच्छी जो मैंने अच्छा फोकस दब किए ना पब्लिक लाइब्रेरी तार बड़ रोल जे कौन सेवाटा दब जे एक्चुअली व्हाट इज द कल्चर हाउ वी हैव टू बिहेव इन द सोसाइटी. मल्टीलिंगुअल कलेक्शंस. सो गोटे सोसाइटी की सबू भेराइटीज रो लैंग्वेज रो लोक आसबे तेणु सेठी मल्टीलिंगुअल कलेक्शंस सबू लैंग्वेज रो बही केमती रही पारिबो सबू लैंग्वेज रो भाषा रो लोक माने केमती बही पढ़ी पारिबे बा ट्रांसलेशन सर्विस हो पारिबो ताकू मध्ये हमें प्रोवाइड करबा. सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन. एम्फासिस ऑन ग्रीन प्रैक्टिसेस, हाइब्रिड फिजिकल एंड virtual services and data driven program evaluation. So data driven events, so we have to collect the data and we'll see that what is the improvisation heichi by आम ताको evaluate करिबा. आम डाटा अनुसार केते लोक शिक्षित हेले आम लाइब्रेरी एफर्ट नेला परे केते कोन हेला बा लोकंगर कोन शिक्षागत उन्नति हेला बा तांकर फाइनेंशियल उन्नति केते हेला. सो दैट इज डाटा ड्रिवन प्रोग्राम इवैल्यूएशन. देन फिजिकल एंड वर्चुअल. आम फिजिकली लोकम पाखु जाई इंटरैक्ट करि परिबा बा वर्चुअली बाय टेलीफोनिकली बा तुमे थ्रू इंटरनेट और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज बाय टेलीफोन सर्विसेज वी कैन interact with them. That is called as hybrid, both the systems. And green practices, that is which is the very supportive and practices that will support the environment and also that will be helpful for the society, that we will go for. Then partnership is also another. Collaboration with the schools, workforce centers, health organizations and immigrant support groups to maximize impact. That public library kamo keval not to provide the books and other things. So it is also collaborate the schools. School le pila manakar kon अधिकार से माने जानिया पे चाहउचंती तांको आर्ट एग्जीबिशन कलो ता सहित तांको इन्वॉल्व करिवो तांको कोन अधिकार तुमे एजुकेट करि पारिबो. सो वर्कशॉप करिकि तो वर्कफोर्स सेंटर्स देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स तांको नेकी मध्ये तुमे काम करिवो जेमति कि लीगल एस्पेक्ट हो कि लिटरल एस्पेक्ट हो क्लब्स हो. सो व्हाट एवर थिंग्स दे आर अवेलेबल तुम्हें तांको सहित इंटरैक्ट करिकि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट प्रोवाइड करिवो. हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस. सो यू विल बी रिलेटेड विथ मेडिकल्स एंड टू प्रोवाइड दैट हेल्थ कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशंस टू द सोसाइटी. एंड इमिग्रेंट सपोर्ट ग्रुप्स टू मैक्सिमाइज इम्पैक्ट. जो माने इमिग्रेंट अच्छी जो माने बाहर आसी से पाखे विशेष किसी सुविधा नहीं पाखे तांको एजुकेट करियार व्यवस्था भी पब्लिक लाइब्रेरी करिवो. नेक्स्ट. सो बाय दिस इट इज आवर थिंग्स वी हैव completed about the functions of the library. Mainly you see that it has to promote educationally, intellectually and to entertainment. For the entertainment of the society, it has a role and also varieties of things for health, for education, for other facilities, even for culture. So it involves all the things to improvise the society by means of the public library. Thank you for your attendance, and this much is today that we have completed as the